दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Ladies and gentlemen, breaking tonight, US court has rejected Tahor Rana's plea to stay his extradition, which means the 2611 plotter is going to be brought back to India. A big win for India. Ladies and gentlemen, that's quick breaking news update from me. Let's go back straight to the debate. And tonight I have with me Sudhanshu Trivedi of the BJP. What I've done tonight is I've got the three main parties, Sudhanshu Trivedi. There are three parties in the Waqf debate, and only one channel and one network is getting three parties together. This is the biggest Waqf debate, therefore, that is live tonight. Which side do you support? Do you support BJP or do you support AIMPLB plus AIMIM? The three parties are Bharatiya Janata Party, which has brought the law, represented on the debate by Sudhanshu Trivedi. Member of Parliament gave a stirring speech in Parliament. Almost 1 घंटे तक वो बोले, देर रात. And we have with us tonight Waris Pathan, National Spokesperson of the All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin, and the founder of the All India Muslim Personal Law Board, Mohammad Suleiman. Can all of you hear me? Sudhanshu Trivedi, do you hear me? Yes, I am getting your voice. Okay, Mohammad Suleiman ji, ab meri awaaz aa rahi hai aapko? Yes, of course I am hearing you. Okay, and Waris Pathan, I hope you are hearing me as well. Yeah, I can hear you, Arnab. Okay. Mohammad Suleiman ji, our founder hai All India Muslim Personal Law Board ke debate is only between three people for 1 hour. Can you begin by telling me why you are trying to challenge the Parliament of India with these staged protests? A. B. Why you want a street war on this subject when you have lost the parliamentary war? You can go to the Supreme Court, but you cannot simultaneously go to the Supreme Court and also go to the street. So I'll give you 1 minute to state your position, and after that, Sudhanshu Trivedi will respond. Mohammad Suleiman ji, please. Mr. Goswami, I have heard your narratives, and I am used to hear your narratives, which are hostile to our community, which are outcome of the particular mindset. But I don't bother, neither I am swayed by your narratives. Only one thing I will say here, that being a democratic state, we have full democratic right to move to the court of law as well as go to the people peacefully, not street war. You use the word street wars, not street wars. It is our democratic right to go to the people, to awaken, to make people know what this majoritism has done, what injustice has been meted out to the minorities. And it is today with the Muslims, tomorrow it will be other minorities, other sections of society. And this is very much against the constitutional guarantee to the minorities and different sections of the country. Article 40 says, right of the equality. Article 25, we have freedom to have a set of religion, set of faith, and embrace, practice, and propagate. Article 26 says that we can manage our religious properties and institutions. Why this discriminatory treatment by this enactment to the Muslim only? Why it is not with other mats, endowments of the mandir temples? Why it's not with other? Why not it with our Sikh brothers of Akala Takht? You have done same thing with Gaya Buddha Vihar. So you are trying to do this with the Muslims community by bringing in the management, the non-Muslims members in the Press Council of India, in the work boards. And that way you are also trying to abolish the Waqf of user. Waqf of user. Waqf of users are, the land was donated by our forefathers. Don't run the pictures without visual references by me. For noble cause, as a divine property. But you are supporting BJP. BJP is, what treatment it is giving with Muslims? If Muslims should not cry, if Muslims have no democratic right to stand against formally, peacefully, democratically to agitate, and when we
declare to agitate. You say it is street war. Yeah, Same narratives you used against the farmers' agitation. So it is your mindset. So first of all, may I intervene for a minute? Now Sudhanshu Trivedi will respond. जितने हमारे दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा, मैं तस्वीरें आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे मोहम्मद सुलेमान जी, फाउंडर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कह रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, दे कैन बी पीसफुल प्रोटेस्ट, आई एग्री, बट लुक एट द पिक्चर्स फ्रॉम मणिपुर. मणिपुर में अस्कर अली इज द बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट. ही इज अ मुस्लिम who is supporting the reform of the Waqf bill. They burnt his house. घर जला दिए. ये कंडेमेशन से क्या होता है? प्रोवोकेशन तो आपका ही है. प्रोवोकेशन आपका है, कंडेमनेशन भी आपका होगा. एक मिनट, प्रोवोकेशन आपकी, कंडेमनेशन भी आपकी. President rule. Please. In Manipur. Now, Sudhanshu. For years together. Okay, now our second speaker. BJP government. Our second speaker responding to All India Muslim Personal Law Board is Sudhanshu Trivedi of the BJP. Sudhanshu Trivedi, floor is yours now, sir. I will. Arnav, I would like to respond to what the representative of All India Muslim Personal Law Board has said. I would like to respond on the technical aspect, the moral aspect, and the political aspect. Number one, Muslim Waqf Board of India is the richest Waqf board in the world. Despite the 57 Muslim countries and some of the Muslim countries which are flooded with prosperity. But India's Waqf board is the richest in terms of land. And now, with due humility, I would like to ask. There are several instances in which there are news of that the Waqf board property has been converted into farmhouses. Waqf board property has been converted into commercial properties. Waqf board property has been converted into malls. Even Lalu Prasad Yadav ji's statement, which was very much viral in the May 2010, when he has said कि पटना में सब गड़बड़ कर दिया है, बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए. There are several instances in which the Waqf board property has been converted into 5-star hotels. But I urge you, just give a single instance in which this Waqf board property has been used to make a hospital for Muslims, a library for Muslims, and a great institution like universities for the Muslims, and even for orphans, for widows, for divorcees, even for that matter, sir, please don't take it otherwise. मंदिरों में भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बता दीजिए जिसमें दिन में 2 टाइम मुफ्त का खाना ही मिलता हो. And here lies the crux. Because there is one honest Muslim who wants to give his property in the charity with a pious sentiment that his property will be used. But now there are some people who wants to become the zamindar of that property in the name of Muslim politics. They want to consider it as their personal fiefdom and they want to misappropriate those things. Now comes the second thing. In 1913, Muhammad Ali Jinnah has got the Waqf board passed in Imperial Legislative Council with the support of Congress. Because Congress in 1906, Calcutta Congress Adivation, they has said that the 1894 Privy Council judgment was wrong. From 1913 to 2013, there was 17 lakh crore properties. And from 2013 to 2023, 21 lakh crore is added. साहब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जमाने में नवाब थे 47 से पहले, हुजूर नवाब थे, सुल्तान आलम थे, हुक्मरान वक्त थे, निजामुल मुल्क थे, तब तो इतनी प्रॉपर्टी आई नहीं. और उस दौर में आ गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2013 में, जब कहा कि मुसलमानों की हालत जो है वो शेड्यूल कास्ट से ज्यादा खराब है. और 2013 से 2023 के बीच में 21 lakh crore rupees as per your statement has been donated by the community, which is as per Sachar committee report was having worse situation than the scheduled caste. Does this thing sounds logical? ये साफ समझ में आता है कि ये छलावा क्या है. इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि एक तरफ शरीफ मुसलमान खड़ा है शराफत अली और दूसरी तरफ सरमाएदार खड़ा है जो उसकी अमानत में खयानत में करके शरारत कर रहा है. तो एक तरफ है शरारत खान और एक तरफ है शराफत अली. ये उन दोनों के बीच की बात है. लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, which our party president and the leader of the house, JP Nadda ji, has said
you name a single Muslim country in which these type of provisions are there in the Waqf board. He has quoted Saudi Arab, which is the birthplace of Islam. It is having none of this type of. He has quoted Indonesia, which is the biggest Muslim country. None of these type of provisions are there. He has quoted Turkey, which was a place of once upon a time was the seat of Turkey Caliphate. No provisions. Even the area of ISIS, Baghdad and Syria and Iraq is not having. Bangladesh and Pakistan is not having. That's why I have used the word, which is not to be taken otherwise in parliament, कि साहब एक कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, पर साहब हिंदुस्तान में तो गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था. And lastly, I would like to say that this is nothing but a fight between an honest, upright Muslim and those who wants to become one and whole soul copyright holder, or rather than thekedar of the votes. These are the hardliner factions. They are trying to become that their full control over the Muslim vote should remain, and they should be considered as one and exclusive wholesale dealer of the voters. तो ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है. ये असली ईमान वाले मुसलमान के दिल की कसक और वोट बैंक के ठेकेदारों की ठसक के बीच की लड़ाई थी. So our government has tried its level best to ensure the justice with On the very strong points made there, Islamic tradition to control the thing. on the very strong points made there by Sudhanshu Trivedi, जो कह रहे हैं कि वारिस पठान जैसे लोग ठेकेदार बनना चाहते हैं मुस्लिम वोटों के, वैसे ठेकेदार तो नहीं बने, 1% वोट भी नहीं मिली. दुख की बात है उनके लिए और ओवैसी जी के लिए कि इतनी कोशिश के बाद, इतनी पोलराइजेशन के बाद भी 0.5% वोट उनको नहीं मिला. He is also going to respond to the Sharafat Khan versus Shararat Ali comment made by Sudhanshu Trivedi tonight. But ladies and gentlemen, I want to remind you, this is your chance tonight to stand by the law. This is a hot debate. Why is this debate live? ऐसे debate में live क्यों कर रहा हूं? ताकि live आप respond कर सके, because tonight BJP is taking on both AM, PLB and AIM together on the program. Our third speaker, Waris Pathan of the All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin. I would like you to extend to me the same courtesy which you gave to Sudhanshu Bhai just now. The first thing, Arnab, the BJP which has brought the bill in the parliament, in both the houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and now it is an act by showing their majority, is per se unconstitutional. It is a clear-cut violation of Article 14, 24, 25, 26, 29 of the Constitution. We have been saying it time and again, and so we have all the right to move the Honorable Supreme Court. And rightly, our party president, Barrister Asaduddin Owaisi, has also moved the Honorable Supreme Court, challenging the law which was enacted in the parliament by the BJP government. Now, second thing is that, Arnab, as we were listening to Sudhanshu Trivedi, Sharafat Ali and ये, अरे सुधांशु जी, आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र कब से होने लग गई है भाई? जिनकी मुसलमानों की 2 मिनट की अजान से आपको नफरत, जिन मुसलमानों की 10 मिनट के रस्ते पे नमाज पढ़ लिया उससे आपको नफरत, ना कोई मुसलमान को MP, ना मुसलमान कोई MLA, ना कभी आप किसी को टिकट देते हो मुसलमानों को चुनाव लड़ने की, उस मुसलमानों की हित की बात करने के लिए आप लाए हो. नहीं, you have brought this bill with an intention to usurp the properties belonging to the Muslims. This is rightly, Arnab, this is interfering with the religion affairs of our community, which no prudent person would accept this. Yes, we are with the Muslim Personal Law Board. The Muslim Personal Law Board has said here we will be doing protests all over the country as per the Constitution, and we are with our party president is a member of that. But here the intention of the BJP is to be seen. There are Hindu endowment boards. Sudhanshu ji, बताओ 4 स्टेट खाली बता दो, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु मिला के वक्फ के उसकी जो बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है ना 14 लाख एकड़ है, मुसलमानों के पास तो पूरे हिंदुस्तान में आप बता रहे हो 9.5 लाख एकड़ है, वो कहां से आ गई? क्या आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर किसी मुसलमान को आप रखेंगे? नहीं रखेंगे. सिख बोर्ड के अंदर किसी मुसलमानों को नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे. तो फिर हमारे रिलीजन मैटर के अंदर मोदी को दखलबाजी करने की क्या जरूरत है? एंड राइटली सेड, वी विल मूव द सुप्रीम कोर्ट. फार्मर बिल का क्या हुआ था अर्नब? फार्मर बिल वाज थ्रोन आउट. ऑल द 3 फार्मर बिल्स वर रिमूव्ड. व्हाट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड? दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट said is unconstitutional. What about the Places of Worship Act 1991? That was also passed in the parliament after hearing both sides, after the Lok Sabha and the Rajya Sabha, both of them passed it. Is it not moved in the Honorable Supreme Court? So here they say because the law is passed, we are moving the Honorable Supreme Court. We are right. We have all the right as per the Constitution to move the Honorable Supreme Court and challenge the unconstitutional law which is passed by the Modi government. And I am sure and hopeful that the BJP, the Supreme Court will definitely repeal the amendments made by the Modi government in the law. Because here, Arnab, you have to see everything. Article 14 speaks about equality. One minute. Now it's becoming very long. I need a response. No, you overshot the time limit. Now one question. One question tonight. Viewers, who is winning the debate tonight? Debate कौन जीत रहे हैं?
और पहली बात यह है, वारिस पठान की रिस्पॉन्स सुधांशु त्रिवेदी देंगे, मगर ये कह रहे हैं, Sudhanshu Trivedi, why are you so concerned about Muslims? Why are you so concerned about Muslims? Were you concerned about Muslims when Muslim women were being abused, threatened and raped using nikah halal? Young girls of the age of 13 were being forced into illegal marriage by 80-year-old sheikhs. Were you disturbed? Were you worried? Were you concerned? Did you think during triple talaq, did you think of what Muslim women go through? About the Muslims. You want to take over the rights of the Muslims. Rights of Muslims. Now Mohammed Suleiman is also on the debate. Watch, producers, all three windows need to be live tonight. My question tonight is to Mohammed Suleiman. It is your mindset. It is your mindset to mislead the countrymen. My mindset? By bringing in other issues which are not here. You have. Why is it another issue? Why is it another issue? And for that particular issue. Why is it another issue? We have come here for debate. But you are, with particular mindset, you are diverting the issues. You are misleading the countrymen. Sir, I ask you one question. Sudhanshu will respond to you. But you listen to my one question. ये question आपको, ये सारा सवाल पूरा देश आपसे पूछ रहा है और पूछता है भारत मोहम्मद सुलेमान जी, जरा अपने गिरेबान पे झांक कर मुझे एक सवाल का जवाब दे। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। आप तक पहुंचने के लिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। आप प्रॉपर्टी लॉ में क्यों घुस रहे हैं? आप तो पर्सनल लॉ बोर्ड है जी। आप प्रॉपर्टी लॉ में क्यों घुस रहे हैं? Religious matter, Mr. Goswami, you don't know. It is about religious matter. These properties are divine properties donated by our forefathers for noble cause. But since you are dealer, person like you and your patrons are dealers who want to take away divine properties to give their industry friends, Ambani, Adani. That's why we are here, to raise the issue, to make the countrymen know what is the fact, what is intention, what is behind Antalya, occupation of Antalya. 10,000 crore building is there on work property. Case is sub judice to High Court. And you want to protect him. You want to protect his illegal occupation. And these things are being exposed now, Mr. Well, Goswami. I don't know. You didn't answer my question, but Sudhanshu Trivedi is responding to both tonight. Viewers, who's winning the debate? It's for you to vote. Now I would Sudhanshu like Trivedi. to respond. Let's get all three back on air. Check. Response time. Number one, any Muslim institution like the committee of the masjid, like the committee of the Imambara, like the committee of Qabristan has nothing to do with that. Number two, this is to deal with only property. I would like to remind whether it is the Allahabad High Court judgment or 1976 Calcutta High Court judgment has categorically said that the managing the property of the waqf is not a religious issue. Clearly 1976. Sir, 49 साल से सो रहे थे क्या? और उसने ये भी कहा हुआ है कि मुतवली का रोल रिलीजियस नहीं है. दिस इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड इट इज नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26(2)(a). तो साहब ये क्या बात है साहब? इंदिरा गांधी के जमाने में जजमेंट आया, अचानक आपको नजर आने लगा. ये साफ दिखाता है दिस इज लाइक आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. लाइक देयर इज लेट मी कंप्लीट सर. पठान साहब यहां तीन लोग डिबेट कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने टर्न पे बोलेंगे, पब्लिक को बेहतर समझ में आएगा. अगर आपका पॉइंट सही होगा तो पब्लिक को बेहतर समझ में आएगा. नाउ आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड द माइनॉरिटी बोर्ड. जस्ट गिव एग्जांपल. मदरसे है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसको मुस्लिम ही चलाएंगे. जो सिख का इंस्टीट्यूशन सिख चलाएगा, पर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन एक ही माइनॉरिटी का नहीं होगा. द प्रॉब्लम विद दीज पार्टीज आर कि इन्होंने हमेशा माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनाया है, किसी दूसरी माइनॉरिटी को नहीं बनाया. चैलेंज हिम. बताइए कोई नॉन मुस्लिम बनाया हो? सिख को हमने बनाया था अटल जी के जमाने में, सरदार त्रिलोचन सिंह को. कभी क्रिश्चियन को बनाया है क्या? कभी किसी पारसी को बनाया है? पहली बार एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर एक बुद्धिस्ट है. मुझे अब लेट मी कंप्लीट सर. आपने अपने टर्न पे, अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? कंप्लीट हो गया आपका, तो कंप्लीट होने वाला नहीं है. टर्न का इंतजार करिए. आपको लगे मेरा पॉइंट कमजोर है, आप धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर बीच में बोलने से आपका डेस्परेशन. वेट फॉर योर टर्न. आप माइनॉरिटी कमीशन को मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी से क्यों कोरिलेट कर रहे हैं? दीज आर टू डिफरेंट थिंग मिक्सचर.
मैं बता रहा हूं, बिकॉज वक्फ बोर्ड इज अ गवर्नमेंट बॉडी. It is a government body to oversee the management. And second thing I would like to ask, if they are saying that they are having a faith in the religious, then why Shia Waqf Board and Sunni Waqf Board is separate? You are not having trust among each other? Why there is not one Muslim Waqf Board? Oh, जब जमीन की बात है तो अपनी अपनी सरमाएदारी है. Was there any representation of Aga Khani? Was there any representation of Bora? Was there any representation of Pasmanda? That's why I am saying ये जमींदारी है साहब, ये जागीरदारी है, ये वो बादशाही है जो मुझे चाहिए अपने हाथ में, विदाउट गिविंग एनी रिप्रेजेंटेशन. अरे मुंबई के अंदर की बात बताओ सुधांशु जी. अभी सुना सुधांशु भाई, अभी सुना ना आपके, अभी झगड़ा होता है. सुनिए आपकी धज्जियां उड़ा रहा हूं डिबेट की. सुनिए सुनिए अरे डबल है, मैं बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं बैठा हुआ. सुनिए मेरा जवाब सुनिए. आप जवाब तो अरे पूरी बात मुंह तोड़ के अभी चलेगा. आप बोलते रहिए, दर्शक देख रहे हैं. तो मेरे को बोलिए अभी तक एक यूनिवर्सिटी बताइए. आई रीट्रेट, नेम वन यूनिवर्सिटी, वन हॉस्पिटल, वन लाइब्रेरी, वन इंस्टीट्यूशन फॉर आर्फन. ये इतनी बड़ी जमीन के ऊपर बोर्ड है. चलिए बताइए मेरे को, क्या बोर्ड है क्या ट्रस्ट है? आप सुनिए मेरी बात. आ गए. अरे सुनिए मेरी बात यार, कितनी बड़ी बात करेंगे आप. सुनिए सुनिए आप सुनिए, मैं सुना. धैर्य रखिए, धैर्य रखिए. बी पेशेंट, बी पेशेंट, अपने टर्न बी पेशेंट, बी पेशेंट, पेशेंट. व्यूअर्स आर विटनेसिंग कि कौन क्या डेस्परेट हो रहा है. मैं बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं कौन क्या प्रॉपर्टी इज अंडर ट्रबल. अवर कमेंट. एंड सेकंड थिंग, एंड मौलाना साहब हैज सेड, सर मेरी बात. अरे भाई, अरे भाई सुनिए तो एक सेंटेंस, और मेरे एक सेंटेंस का जवाब दीजिए. तो मौलाना साहब ने कहा कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो 2013 के बाद कैसे आ गई? जब आप बताइए सच्चर कमेटी रिपोर्ट सही थी, या 2013 के बाद 21 लाख एकड़ लैंड, विच इज फैक्ट. दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते. या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है, या दोनों झूठ है. बता दीजिए. एंड सेकंड थिंग, 14 में आ गए तो कहां से आ रहे हैं? इट इज बीन मेड वेरी क्लियर दैट दोज हु आर हैविंग अ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन दिस. And if the property is not registered, so in eyes of law, that property is not valid. Intended You have to towards prove the it. minorities Simple सी बात है. to take away properties, to take away constitutional right. You are not allowing our institutions to appoint teachers. You are not allowing in Uttar Pradesh madrasas to appoint teachers. Teachers nowhere in the madrasas and minority institutions. Students are not. No, it's wrong. Teachers. Our government has only asked for illegal madrasas. Now there is no problem with those who are having proper registration. If you are running any, you want to appoint proper registration. You want to appoint non-Muslim members. You want to appoint non-Muslim members illegal madrasas के साथ problem, illegal के साथ कोई नहीं है. in the work board. आदत पड़ गई है illegal करने की जनाब. Muslim may lose their right to control, to manage the property donated by their forefathers. That is intention. That is your intention. And now your intentions are exposed after debate in parliament. You can't hide behind your MPLP Bharatiya Janata. You can't hide behind your fascist agenda, Mr. Sudhanshu ji. India knows what is behind your hidden agenda, Mr. Sudhanshu. Now I would like to respond. अरे सुधांशु जी, मौलाना साहब हमें जवाब दे दूं. अब लाइक टू नहीं सुनिए सुधांशु जी. मौलाना साहब एक मिनट. सुधांशु let him respond. Sudanshu, let Waris also say. It's 2 versus 1 tonight. Both of them are against Sudhanshu Trivedi. I have to intervene right now. अब मैं बताना चाहता हूं. एक सवाल किया है. One question has been asked tonight. One question has been asked tonight by Arif Mohammad Khan. By Modi government. वारिस खटान, calm down. आरिफ मोहम्मद खान जी ने बहुत बढ़िया साउंड बाइट दिए, इसको सुन ले. नहीं, आप you are getting irritated with Sudhanshu. What's your problem? Challenge us that who wins the debate, allow us to make our point. Well, he has won the debate already. Only 8% is with you. 92% is with Sudhanshu. मुंबई के अंदर उस जगह के ऊपर एक बड़े बिलियनर ने अपना आलीशान बंगला बना लिया है. क्या आप में ताकत हिम्मत है कि चलेंगे मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट खाली करवा के लाएंगे? अगर आपको मुसलमानों के ऑर्फनेज की इतनी फिक्र है, मुसलमान यतीम बच्चों की इतनी फिक्र है, चलिए आगा खान के और ट्रस्ट की जगह दी, 2 जनों को निकाल दिया. अरे कागज रजिस्ट्रेशन दिखाइए और ले जाइए. ये मेरे साथ रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए. आपके ख्वाबों ख्यालों तो थोड़ी हो जाएगा. इमाम वो गए जब शहंशाह आलम हुआ करते थे, जिस लैंड पे उंगली रख दी वो हमारी हो गई. कागज दिखाने पड़ेंगे लैंड के.
Muslims देंगे endowment? ASI protected आप Why दिखाएंगे it cannot be ASI with the protected Muslims? करेगा उसको Why you are करेगा वो जो ASI माय protected रिक्वेस्ट करेगा वक्त से है बाद जब ये बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिए जब मैं बोलूं तो इनका फीडर ऑफ कर दीजिए दे आर लूजिंग द Waris Pathan live polling right now 98%, 92. You are Mr. Suleiman, honest enough Mr. to Suleiman treat ji, all sections of society. Suleiman ji, एक बहुत can I get Arif Mohammad Khan live? Let's get You it. are violating constitutional provision of the right of equality. 22 with you 78% with us I will show you Where? show you the data कहाँ पे? आपके ट्विटर फीड पे? you show me the data I'll show you आपके ट्विटर फीड पे? Concocted data. आपके ट्विटर फीड पे 78% आपके साथ है. Concocted वक्ता बन जाओ. data prepared by your Nagpur. Prepared by your Nagpur. We know that. Mr. Subanshu, we know that. BJP spokesperson. India knows it. Just be the BJP India spokesperson. knows it. Well, the nation. 99% of I ask you tonight. 99%. I ask you tonight, ladies and gentlemen. You can see a lot of attack is coming to me. You see, they're attacking me. AIMPLB is attacking me. AIMM is attacking me. No problem. But Sudhanshu ji, एक minute. There has been a personal attack on me. I have to respond. Muslim community. I am saying tonight, Mohammad Suleiman ji, आप वारिस पठान की तरह बात मत कीजिए. वारिस पठान ऐसे ही बात करते हैं, मगर आप सीनियर आदमी हैं. You are a senior man. We know your narrative. We Okay. know your mindset. Okay, now I ask you this, Mohammed Suleiman. One minute. Okay. I am a nation first narrative, sir. Nation first narrative. Suleiman sir. One minute. I type that. I am asking Mohammed Suleiman ji tonight. I am asking Mohammed Suleiman ji tonight with the greatest of respect, and he should listen to me. And I am only asking Mohammed Suleiman ji one question. And please, sir, please listen to me, sir. पहले तो आप मैं जितनी इज्जत से आपके साथ बात करता हूँ, आप 10% इज्जत हमें भी दिखा दें तो कोई बुरा नहीं होगा. और दूसरी बात मेरी है कि अगर एक हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट करें, अगर मैं एक हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट चलाऊं और आप कहें अर्नब इसकी ऑडिट करेंगे, तो मैं कहूंगा ये एंटी हिंदू नहीं है. अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हो, उसकी रेगुलेशन ऑडिट हो, तो एंटी क्रिश्चियन नहीं है. इसने कहा ऑडिट रोके. इसी तरह से कल अगर वक्फ बोर्ड पे इस तरह की ऑडिट हो तो होनी चाहिए. You are welcome to audit, but how you can nominate non-Muslim in the management? How you can nominate? Because you have brought in, because Sonia Gandhi brought in Hindus under the ambit of the Waqf Board in 2013. Did you object then? Did you object when she brought Hindus and Parsis and Sikhs and everyone under the Waqf Board in 2013? Did you object? 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 At that time, did you object? Did Sushma Swaraj object? Did Rajnath Singh object? Did Advani object when the bill was passed? When the amendments were made in 2013? Why did you include Hindus? Why did Congress include Hindus under the Waqf Bill in 2013? I am asking a logical question. That's why we have decided to move to the highest court of law. So move to the court. Don't move to the street. Move to the court. Don't move to the street. You can't move to the street, sir. Because it is. I'm not against your moving to the law, to the courts of law, but not on. You can't do both. It is against the fundamental right of the Muslim. What provision of law? Yes, we will hit the street as per the constitution. You cannot stop us. You can't win an assembly seat. What will you move the street? The constitution has given us the right to protest. The constitution has given us the right to protest, and we will protest. Doesn't mean you represent Muslims. The government repeals the amendments which are made in the Waqf Amendment Act. I represent myself. I will go on the street. Stop me. The constitution has given a right to Waris Pathan individual. I will go on the street if nobody follows. I am following the Muslim Personal Law Board, and they have issued direction that we will hit the streets, protest as per the constitution. We will move the courts. Every legal option will be taken to ensure that the Waqf Amendment Bill which is passed is repealed, taken back, which is unconstitutional. And they will have to, like the farmers' law, this will be removed. Electoral bond, unconstitutional. And let me tell you, Arnab, the Supreme Court will definitely see to it that this law which is unconstitutional is repealed at the earliest. Okay. And I am sure this is going to happen. Okay. And then we will debate one more time. Okay, one minute. Just wait. I am sure that Sudhanshu will respond to you. I am sure Sudhanshu will respond to you. But मुझे just नाम याद आती है शाहबानों की, जब उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक करके तलाक दे दी,
and when she was denied even access to her children by her husband, where was your thinking for Muslim women then? Where was your thinking? She was denied access to her children. She was denied access to her children. बिल्किस बानो के बलात्कार बच्चों से मिलने नहीं दिया था, बेल दे दिया उनको, बच्चों से मिलने नहीं दिया था. Where was your concern for Muslim women then? अफ्रीकी याद नहीं आई आपको? अरे don't shout. अरे आपने Don't shout. उसको मार डाला. Once again it is a false narrative. आपने उसको बलात्कार. Once again it is a false narrative. हाईलाइट किया, टिकट दिया. False narrative. पहलू खान का चेहरा आपको नहीं दिखा. Sudhanshu Trivedi. करके मार डाला था. Always सलमान था. Ladies and gentlemen, you can take your phone close to the TV. You can take your phone close to the TV. You got the QR code and you can use it to vote. I need your votes. You can also go to republicworld.com and you can see the streaming and give your comments live. I'm going to open the same poll. Now, ladies and gentlemen, Sudhanshu Trivedi is responding. The debate is little more than 2/3 over. Last 1/3 में Sudhanshu Trivedi. सुधांशु भाई. Sudhanshu Trivedi's turn. उनको बोलने दे. वारिस पठान उनको बोलने. आप दो हैं, वो अकेले हैं. नहीं, Arnav, my submission is to ensure a healthy debate, put my feather down when they are speaking. Okay, now Waris, I'll lower your fader now. I'll lower your fader, Waris Pathan. Let the debate continue. They were speaking over each other. Let the debate continue. I was not speaking at all. Let the debate continue. They were speaking over each other. आप बोलिए Sudhanshu. Having even respect for each other. Now I will respond point by point. Number one, Maulana ji has said. Sudhanshu, louder. Audio down. Yeah, go on, Sudhanshu. I will respond point by point. Number one, Maulana Saab has said why there should be a non-Muslim in any waqf board. So I would like to just give an assurance that this will be only an affair among the Muslims. When you will claim a Gurdwara in Yamunanagar district of when you claim a temple in Tirunchuderi temple in Tamil Nadu, when you claim 400-acre land of Christians in Munambam, then how can you think that there should not be a Christian representative, there should not be a Sikh representative, there should not be a Hindu representative? And I would like to quote to the people that the Catholic Bishop Council of Kerala has written a letter on 31st of March 2021. But क्या तरीका लगातार बदतमीजी कर रहा है? और ये चिल्लाते चले जा रहे हैं बीच में. इतनी देर से शांति सुन रहा हूँ और ये फिर शुरू हो गए. चिल्लाना शुरू कर दिया. आप बोलिए. Put me on it. आप बोलिए. मैं बताना चाहता हूँ. आप बोलिए. 31st of March 2025, Kerala Bishop Council has written letter to the government and they have urged the MPs. So 400-acre land of Christians in the Munambam area of Kerala has been claimed by the Waqf board, which has become a suffering for 600 Christian families. Now they need a clear, strong legislation to prevent such things in future. I would like to ask, you give an assurance that you will not claim any other's land. You will claim the government land and still you will say that there should be only a Muslim representative. You are claiming Parliament of India. You are claiming Airport of India. The airport of anything. And one more thing, sir. क्या तरीका है भाई ढंग से? किस तरीके से बहस कर रहे हैं भाई? सबको दिखाई पड़ रहा है. And one more thing, they try to say that they are having utmost respect to the Places of Worship Act. Places of Worship Act says that any status of any place of worship cannot change after 1947. तो मैं पूछना चाहता हूं, तमिलनाडु के जिस टेंपल पे क्लेम किया गया, उस क्लेम को वक्फ बोर्ड को फोरफीट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है. जब गुरुद्वारा पे क्लेम किया गया यमुनानगर में, उसे फोरफीट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है. जब चर्च की लैंड पर केरला में, तो उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए था वक्फ बोर्ड. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है. गजब है मौलाना साहब. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी आप ही को चाहिए और वक्फ बोर्ड में भी आपको चाहिए. जब जैसी सहूलियत हो वैसा ही चाहिए जनाब. इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है. इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एक तरफा चाहिए, यानी छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे. खरबूजे कोई है. That's why I'm technically asking, can Maulana Saab give an assurance that it will remain a Muslim affair? They will not go and claim any property. And one more thing, जो आप प्रॉपर्टी पे क्लेम करते हैं उसका बेस क्या है? ये मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, इसको जरा दोबारा कनेक्ट करवाइए. मैं पहले पूछना चाहता हूं कि ये दोबारा जो आप क्लेम करते हैं उसका बेस क्या है?
when Islamic Hukumat has ended in Delhi after Aurangzeb in 1707. Divide and rule. And the Britishers have took over the entire control over India. Even during the time of Bahadur Shah first, in around and Farrukh Siyar in 1718 and 20, Marathas were collecting the revenues from Lahore to Karnataka. भैया तो आपकी हुकूमत रही कहां? 1739 में नादिर शाह ने तबाह कर दिया था. 1765 इलाहाबाद की संधि हुई, शाह आलम ने सारी जमीन अंग्रेजों को दे दी. साहब ये बाद में आ कहां से गया? अगर ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा है तो माना जाना चाहिए कि ये लैंड पे रेवेन्यू ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे, ये वक्त की लैंड थी. अगर नहीं लिखा है तो व्हाट इज द लेजिटिमेसी? कि 250 साल तक आपका उस पे कंट्रोल नहीं रहा और आप अचानक खड़े हो गए कि साहब ये तो मेरे को चाहिए. एंड सेकंड थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द मुगल हुकूमत जो जजिया की बात करती थी, मीन द टैक्स ऑफ द नॉन हिंदू, जो जिम्मी की बात करती थी, दैट द नॉन मुस्लिम शुड बी अ सेकंड ग्रेडेड सिटीजन, और जो गाजी की बात करती थी, those rulers who used to proud that they were having murdered and butchered so many non-Muslims. How can the farmans of that government have proper constitutional legitimacy? Baba Saheb Ambedkar's constitution. So I am asking a very technical question. When the ownership was finished after Britishers, how come it erupted after 2013? There cannot be such type of draconian law that you have claimed. This is my land. Now you will decide that this is your land and you will give your judgment. And that's why the people was not having right to move to the court as a civil suit. Our government has provided that if anybody's property is claimed, he is having full right like a normal citizen to move to the High Court and Supreme Court as civil suit, which was barred. That's why you were claiming so many of land. Sir, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल बात हो या मॉरल बात हो, आपके पास जवाब नहीं. Why you are not nominating non-Hindus in Hindu endowments? And one more thing I would like to add. Why nominating? Why? Why this discrimination? Why this discrimination? Arnav, one more thing I would like to add. Those who are talking about that what is being done for Muslims and what is not being done to the Muslims. Unequal paths. Right of equality should be upheld. What is the discrimination was that, Maulana Sahab? The discrimination was that you were not allowing anybody. कि साहब मैं ही वकील, मैं ही जज, मैं ही मुंसिफ, मैं ही फैसला दूंगा और फिर जमीन मेरी. साहब, you name a single instance in the entire world in which the claimant is the judge. करना चाहते हैं. The claimant is the Waqf board and the judge is the Waqf board. And then anybody can go to tribunal and after tribunal he cannot go to court. हमें मालूम है कि फैसला हमारे खिलाफ. That's why I am saying this law was in starking contrast to the provisions of the Constitution. जारी रखेंगे. लोकतंत्र में देशवासी मालिक होते हैं on the court of law. So it seems हम देशवासियों तक जाएंगे, देशवासियों को बताएंगे आपके कुटिल. और अर्णव में एक बात, एक भी काम की बात नहीं थी क्योंकि आपका मुसलमानों की आपका I would like to Sudhanshu, let him respond. Sudhanshu, let him respond. Let Mohammed Suleiman respond. स्वीकार नहीं कर सकते. Just three questions. हैं आपके Waris Pathan सुनो भाई. Brigadier Mohammad Usman was the first Gallantry Award winner of the Indian Army who has sacrificed his life. कौन गया Brigadier Mohammad Usman? आपने किस तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नवाज़ तनाज़ याकूब मेनन का नवाज़ कितने लोग हैं उनके नवाज़ तनाज़ कितने के कलाम आपने व्यवहार किया है. कलाम साहब first was ending and we were expecting that actually all of you were opposing, but in 2007 was the same year in which all were campaigning for the clemency of Afzal Guru. What you are talking about, sir? मोदी जी ने 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पर बुलाया उनकी पत्नी को और सम्मानित किया, और आपने यासीन मलिक को बुला के सम्मानित किया, who is having the charge of murdering Air Force officer. क्या बात करते हैं साहब? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिसने पहली सेनाई बनाई उसको भारत रत्न अटल जी के जमाने में जागरूक हो रहे हैं. हम अच्छे और सच्चे मुस्लिम के साथ हैं. आरिफ मोहम्मद खान साहब हु इज दी गवर्नर ऑफ बिहार, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मैं दावा कर सकता हूं कि मौलाना साहब उनसे बहस नहीं कर सकते जितना इल्म उनको इस्लाम का है.
जितना वो हदीस से लेकर कुरान तक कोट कर सकते हैं, शरिया कोट कर सकते हैं, उतने अच्छे मौलाना कोट कर सकते हैं, सियासी जमात। अच्छा 1 मिनट सुलेमान साहब एक सवाल है, सुलेमान साहब एक सवाल है, एक सवाल। आप लोग 1 मिनट सुधांशु जस्ट वेट, सुधांशु जी रुकिए, सुधांशु जी जरा रुकिए प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट रुकिए सुधांशु जी, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। मेरा सवाल ये है और आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप मान के चले कि 2006 में 12,000 करोड़ रुपए जब्त हुए थे और वो जो ये बड़े रिच मुस्लिम्स हैं उन्होंने अपने पॉकेट में डाल दी, तो अगर उसकी रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन की जाए तो पिछले 20 साल में अप्रोक्सीमेटली पिछले 20 साल में 4 से 5 लाख हजार करोड़ रुपए वो किसी बड़े मुसलमान लीडर के पॉकेट में गए हैं। एक मिनट, आप 4 से 5 लाख करोड़ रुपए, 4 से 5 लाख करोड़ रुपए वो वापस कौन देगा? वो वापस कौन देगा? वो वापस कौन देगा? क्या ओवैसी देंगे, क्या वारिस पठान देंगे, कि आप देंगे? कौन देंगे उसको वापस? गिव इट टू द पुअर मुस्लिम्स इवन नाउ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेपरेशन। नैरेटिव को चलाएंगे और उसको लेके दिखाएंगे और जिस तरह से फट मचाइए, Hear your narrative in shape of question, but you will not tolerate our हाँ, हिंदू एलिमेंट बोर्ड में घपला नहीं हुआ। क्या बोला गया पार्लियामेंट के अंदर कि मंदिर के पैसों को चोरी कर लिया गया, ये तक तो इल्जाम लगाया पार्लियामेंट में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरा बोला, इनको सुना है। सुधांशु जी वो नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी जवाब दो, प्रोटेस्ट के ऊपर डिबेट है। सुलेमान साहब जरा, सुलेमान साहब 2 मिनट रुक जाइए। सुलेमान साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे 2 मिनट, जरा सुधांशु जी को घेरने दो। आधा घंटा उन्होंने बकवास की, जरा अपना जवाब देने दो हमें अपनी बात का। पीसफुल प्रोटेस्ट करना अलाउड है या नहीं संविधान में है? अगर मैं एक आदमी काला पट्टी बांध के पीसफुल प्रोटेस्ट करता है इस काले कानून के खिलाफ, कौन से कानून के तहत आपके ऊपर 2 लाख रुपए का बॉन्ड भराने का बोलते हो? कौन से कानून के तहत आप उसको बोलते हो कोर्ट में हाजिर लगा? वहीं पर रामनवमी के जुलूस के अंदर लोग निकलते हैं, रस्तों के ऊपर जाते, दरगाह के ऊपर भगवा झंडा फहराया जाता है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है? क्या उनका पासपोर्ट आप इंपाउंड करेंगे? क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलता है? नहीं चलता है। इसीलिए आप बोलते हैं ना बीजेपी की कटनी और करनी में पूरी खोट है। और आपने इसमें इस्तेमाल किसका किया? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, आपके साथ वो चिराग पासवान, जयंत चौधरी। अगर मोदी चाहता तो 2014 से 19 तक में पास कर देते, अगर चाहता तो 2019 से 2024 तक में लेके आ जाते बहुमती, मगर क्यों नहीं? ये चारों को इस्तेमाल करके मोदी ने ये काला कानून लाया है। अब ये चारों को भारत देश का एक मुसलमान जवाब देगा। ये चार तो आपके झांसे में फंस गए, मगर भारत के मुसलमान समझदार है, वो तुम्हारे झांसे में नहीं फंसेगा। हम इस काले कानून का पूरी तरह से पुरजोर फाइट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे इसमें ऑर्डर देगा, हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। जिस तरह आपको मुक्की खानी पड़ी फार्मर बिल में, इलेक्टोरल बॉन्ड में, इसी तरह आपको इस बार भी मुक्की खानी पड़ेगी सुधांशु भाई, क्योंकि मुसलमानों के यतीमों का अधिकार है, ये अल्लाह की अमानत है, ये चैरिटी में दिया। इमोशनल एंगल मत दीजिए, इमोशनल एंगल मत दीजिए। ओवैसी के पास प्रॉपर्टीज है कि नहीं? और ओवैसी के प्रॉपर्टीज है कि नहीं? ओवैसी के पॉकेट में फर्क पड़ रहा है क्या? मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है। ओवैसी के बैंक बैलेंस में ठेस पहुंची है क्या? तो इमोशन में लाएंगे, एंगर होगा। I'm asking you, does Owaisi, it's only a question, does Owaisi have waqf property? Mr. Arnav, you are insulting a Muslim parliament. I am asking him whether Owaisi has waqf property. Will be given defamation. This is your, actually, this Why is your style. let Owaisi respond to Owaisi? Why you are insulting? I am asking him whether Owaisi has the question which is asked. Sudhanshu is on the debate, Mr. Sulaiman, thank you. Sudhanshu, only Sudhanshu and Waris right now. Sudhanshu, respond to Waris. 2 on air, please. Thank you. That is your style. Yeah. Only more. Sudhanshu, 1 minute to respond. Thank you. His friends have usurped the 30 seconds to respond, Sudhanshu. Thank you. Inch out of it, and if you level baseless allegation against us without any evidence, without proof, you will be facing. It's a question. And we'll send you to jail. वारिस पठान why don't you challenge Aga Khan Trust, which is taken away usurped by the billionaire? It's a question. It's a question. 3D क्या है? 3D. Thank you. What is now? It's time. You've responded to the question. Sudhanshu's turn to respond. Thank you. और हमारी जगह को ले लेंगे। संबल की मस्जिद पे आपकी नजर है। संबल की मस्जिद आपको इल्म ही नहीं है कि अल्लाह मियां का फजल क्या नहीं है। आप ले लेंगे। अगर हम पिछली बार पारित करवा देते तो आप कहते बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तब पारित हुआ। आज हुआ है तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सपोर्ट
मिली है. इसीलिए And I would आपको like to say, इस्तेमाल किया. those Muslims who are trying to usurp the property of normal, honest Muslims, they are ganging up, cutting across the party line. मैं आज पूछना चाहता हूँ वारिस पठान साहब, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ने बताइए कितना पसंदीदा मुसलमान है? उनको कौम कभी ये बताइए कितना गद्दी, घोसी, अंसारी, मेरासी, जुलाहा? I want an answer. How much is the representation of that community? What is the representation of Dawoodi Bohra? What is the representation of Qayyum Khani? Okay, ladies and gentlemen, the final tally on my program tonight. And just I want to ask, इसने आपको those who have built the पासवान मुसलमान था, they will repay to the waqf board? या अल्लाह की प्रॉपर्टी के ऊपर 5-स्टार होटल उत्तराखंड में फार्म हाउस कहते हैं ये खिदमत के लिए, इबादत की प्रॉपर्टी के ऊपर ये. Now you are trying to mislead, sir, but be very careful, be very categorical. वक्त बदल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है. Legal, moral and political, all the aspects, the people are becoming more and more aware, more and more wiser. So it is becoming consistently clear that those who want to become the so-called self-proclaimed champion of one and exclusive copyright holder of the Muslim vote bank, now their hopes are being belied, and that's why these type of things are coming, and we have seen several times. मुझे सिर्फ एक बात फिर लास्ट में जो मैंने कहा था सर पहला, मुझे बता दीजिए एक लाइन में कहना चाहूंगा फॉर द व्यूअर्स. अर्नव, राम जन्मभूमि का टेम्पल 2.77 एकड़ लैंड, 3,000 crore rupees earning, and up to now 400 crore tax. And वक्त 39 lakh acres. शहीद कर दिया था. Be very, all listeners, viewers should listen. 2.77 acre has shown 3,000 crore rupees earning and contributed 400 crore to the tax. And 39 lakh crore rupees has been earning just 166 crore, almost negligible contribution to the taxpayer, and with no contribution to the Muslim, deprived, poor section, deprived section, divorcee. Yeah, okay, ladies and gentlemen, I need to close the debate right now. The debate is live. At end vote is 92% are supporting the BJP, 8% are supporting All India MIM. This has been a fantastic debate. ये बहुत बेहतरीन debate हुई, हमारी बहुत अच्छी debate हुई. And I thank you all. And one more thing, Waris Pathan साहब, ये तो खत्म ही नहीं होगी. वारिस पठान, Sudhanshu Trivedi ji, I'll have to close the debate at this point. This has been a fantastic debate. Audio. सपोर्ट करने चाहिए थे मौलाना साहब और वारिस पठान को. ये भी कुछ मामला लगता है कि आप जिनके लिए करने कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज में भी जागृति. 92% for BJP, 8% for AIM, for AIM PLB. That's the live poll tonight. I thank you very much, ladies and gentlemen. This has been a fantastic debate. And while we've been debating this, Donald Trump has put out another threat to China, a big threat. We'll bring you details of that on the other side of a very short advertising break. For a quick breather. Arnab will be right back with the debate. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी MDH